Morning students, today I want to discuss here class 11th chemistry, some basic concepts of chemistry. First, what is chemistry? Chemistry is defined as the study of the composition, properties and interaction of matter. Chemistry is often called the central science because of its role connecting the physical sciences, which includes chemistry with the life science and applied science as medicines and engineering actually. So all students know already chemistry. There is no new thing. Only we have discussed here various branches of chemistry, which is already you know what is organic chemistry, what is physical chemistry, what is biochemistry, what is inorganic chemistry, analytical chemistry, all that. So first, फिजिकल केमिस्ट्री. केमिस्ट्री जो है ये जो है कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और इंट्रैक्शन ऑफ मैटर्स को डिस्कस करते हैं. इसका इंट्रैक्शन को डिस्कस किया जाता है. केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस भी कहा जाता है क्योंकि इसका रोल जो है वो फिजिकल साइंस और अदर साइंसेस में भी है. अब लाइफ साइंस या अप्लाइड साइंस, जैसे हम मेडिसिन और इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पर भी इसका रोल होता है. और ये हम आसानी से देख सकते हैं कि कितने टाइप्स की केमिस्ट्री है या ब्रांचेस कितने हैं केमिस्ट्री के. फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट केमिस्ट्री का ब्रांच है जो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री ये कनेक्ट करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस को, जो डिपेंड करता है उसके केमिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस पर. So physical chemistry, we can say that physical chemistry is the branch of chemistry which concerned with the way in which the physical properties of substance depend on the influence of their chemical structure, properties and reactions. Okay. So second, what is inorganic chemistry? The branch of chemistry which deals with the structure, composition and behavior of inorganic compounds. ये जो है इसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और बिहेवियर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिकली व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स और which can also be synthesized in the laboratory, that is inorganic compound, whereas organic compound only found in medicinal, that is in nature only. This is also known as natural acid also. So in organic compound like sulfuric acid, H2SO4, hydrochloric acid, these are the inorganic compounds. Organic compound like acetic acid, urea, ammonia. Ammonia is also inorganic compound, and these are the basic difference between inorganic and organic compound. Now, so this, their composition and its behavior, these are discussed already. So second, organic chemistry. This is also branch of chemistry which deals with the study of structure, composition and chemical properties of organic compound. It is known as organic chemistry. Biochemistry is discipline which deals with the structure and behavior of components of cells and chemical process in living beings. This is known as biochemistry. Analytical chemistry is a branch of chemistry deals with separation, identification, quantitative determination of the composition of different substances. बेसिकली अगर हम बात करें तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. जैसे केमिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और उसका रिएक्शंस क्या है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेगा, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और बिहेवियर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बिहेवियर पर डिपेंड करता है. ये कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स है, इनको ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. और जो अदर देन कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल्स में अगर देखें तो ये आपका अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. This zinc carbonate, magnesium sulfate means other than carbon compounds.
it is known as inorganic compound. And organic compound basically carbon and hydrogen compounds. That is carbon and hydrogen compound means acetic acid, formic acid, ethanoic acid, butanoic acid, aldehyde, ketones. These are the structure main types of organic compounds. So बायोकेमिस्ट्री भी डील्स करता है स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स. जो बॉडी सेल्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, बाईसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर हैं, इन सब के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, इन सब के कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर डिपेंड करता है. तो ये इससे डील करता है और इन सब को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं. बायोकेमिस्ट्री में सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इनके कंपोनेंट्स के बारे में, स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया जाता है. और लिविंग बीइंग्स का जो केमिकल प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर. एनालिटिकल केमिस्ट्री ये डील करता है सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द, मतलब क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन का इन द सेंस मतलब कि जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उसमें हम वॉल्यूम्स के बारे में डिटर्मिनेशन करते हैं. नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोललिटी, these are the basic things which are analyzed through this branch of chemistry, that is analytical chemistry. Now general things which you already discussed in the class 9th, this is very most important discuss here also. Matter you already know, it is anything that occupies space and possesses mass, presence of which can be left by any or more five sense, like three physical states: solid, liquid and gas. Solid substance is said to be solid if possesses definite volume and definite shape. Examples: sugar, iron, gold. These are the examples of solid. And liquid as substance is said to be liquid if it possesses definite volume but no definite shape. And gas neither possesses definite shape nor definite volume. Okay, water. Examples of liquid gases: carbon dioxide, hydrogen, oxygen. These are the gases. So different processes takes place: conversion processes, sublimation, solid change into gas, sublimation process, and solid change into liquid, fusion process takes place, and liquid change into gaseous state, that is vaporization process takes place. Okay, so classification of matter at माइक्रोस्कोपिक लेवल. माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो क्लासिफिकेशन है मैटर का, वो जो है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में इसको क्लासिफाई किया गया है. मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये हम देखेंगे. तो मैटर को दो टाइप्स में बेसिकली क्लासिफाई किया गया है. यहाँ पर अगर हम देखें तो मैटर्स बेसिकली कितने टाइप्स में डिफाइंड है. ये जो है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, ये दो टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है. First, homogeneous mixture. Second, heterogeneous mixture. Pure substance, elements and compounds. These two types of compounds are known as pure substance. But first, what is mixture? जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस प्रेजेंट हों किसी भी रेशियो में, उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं और इनको कहा जाता है क्या, मिक्सचर. दो या दो जो सब्सटेंस हैं वो प्रेजेंट हैं किसी भी रेशियो में, तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं. मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है या हेट्रोजीनियस भी हो सकता है. तो व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर कंपोनेंट्स होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और उनका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब ओनली वन फेज में एग्जिस्ट करेंगे. लाइक शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, नेक्स्ट वन इज heterogeneous mixture. In heterogeneous mixture the composition is not uniform throughout. इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जांपल्स ग्रेन्स एंड पल्स अलोंग द सम डर्ट ऑफ एन स्टोन ऑल्सो पीसेस आर दीज, मतलब उसमें कई दूसरा फेस भी मिक्स होगा, यानी कि वो डिफरेंट फेस में होंगे और इनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा. व्हाट इज़ एक्चुअली फेस? डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ मैटर दैट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन कंपोजिशन, जो हमेशा अनचेंजेबल रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज कहते हैं. फेज एक्चुअली
distinct portion of matter that is uniform throughout the composition and properties. Okay, let us discuss here pure substance. Only one kind of substance present in the material, that is known as pure substance. This one, in chemistry, substance is a form of matter that has constant composition and characteristic property. It cannot be separated into components by physical separation method, that is without breaking chemical bonds. बिना हम chemical bonds को break किए इसको जो है separate नहीं कर सकते हैं physical method से. Actually इनका जो classification है वो 3 types का है. You already know matters are present in 3 states. First one is solid, second liquid, third one is gas. Okay, so let us now discuss here some important next classification, that is the pure substance. Pure substance can be further divided into elements and compounds. Elements are pure substance, actually one kind of particles present, only one kind of particles present, and depending upon the physical and chemical properties, elements further subdivided into 3 classes: metals, non-metals and metalloids. Compound is also pure substance which containing 2 or more elements combined together, fixed portion of mass. Further, the properties of the compound are completely different from those of the constituent element. Moreover, the constituents of the compound cannot be separated by simpler method, by physical methods. They can be separated by chemical methods actually. So if we discuss here about the element of and compound, some examples there, then what we can say that some examples of chemical compounds are, you can say here first, that is this is in this example you now can see that first is CH3OH. This is the compound basically, in which many of the element present there: carbon, hydrogen, oxygen. 3 elements mainly present: carbon, hydrogen and oxygen. So this is the compound and these are the elements. This is, if we are talking about the metals and non-metals, then this is only non-metal. Hydrogen possesses both properties. And this one is hydrogen is gas actually. Here it is a element, and it is metals also and non-metals, which positions are not fixed, and oxygen is also non-metal. Another example of compound is magnesium sulfate. Magnesium sulfate, this one is magnesium sulfate, MgSO4. This is also element compound proper. This one example of compounds. Here 3 elements also present. First one is magnesium, sulfur and oxygen. So magnesium is a metal, sulfur and oxygen are non-metals. And some metalloids are also there, like germanium, silicon. These are the metalloids which falls under the categories of elements. So what we will discuss here, actually the properties of matter. Next topic, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये इनको बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको मेजर किया जा सकता है बिना चेंज किए इनकी आइडेंटिटी को. फॉर एग्जांपल्स, इन फिजिकल चेंज यू ऑल्सो स्टडीड अबाउट द व्हाट. क्या आपने स्टडी किया? फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत फिजिकल चेंज के अंदर रख सकते हैं. और यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, बिकॉज नो कंपाउंड फॉर्म्स. कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है. कंपाउंड जब फॉर्म नहीं होगा तो क्या वो जो है
वो फॉर्म करेगा, कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा तो चेंज, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी. So examples of physical properties are color, order, melting point, boiling point, density, etc. Chemical properties are those properties in which chemical change in the substances occurs. Examples of chemical properties are characteristic reactions of different substances like acidity, basicity, combustibility, and chemical reactions towards the different substances. These are the main examples of the chemical properties. Okay, now we discuss here about the measurement some physical quantities which we come across the scientific studies. During our scientific studies that are known as physical quantities here, these are divided into two parts actually. First one is number and unit. Unit, what is unit? A standard of reference chosen measure of any physical quantities, SI units in French light system. It will be classified as the following uh, characteristics. So here we have discussed here some physical quantities and their units. So first, if L, second, this one is length. Length, M, that is mass, I, this one is electric current, and T, that is temperature, length, mass, electric current, temperature, amount of matter, amount of matter. This is luminous intensity. And one more here, length, that is always measured in meter. This is a SI unit of length. Mass, SI unit of mass is kg, and electric current, SI unit of electric current is ampere. Temperature Kelvin, and amount of matter is mole. Luminous intensity measured in candela. Okay, and these are the basically, so L, M, I, length, mass, electric current, luminous intensity, temperature, amount of matter, and their symbols are candela, meter, kg, electric current ampere, temperature in Kelvin, it is in mole. Okay, so these are the SI units of different quantities like this one. And one more here we not discussed here, actually time, which is in second. This is the SI unit of the 7 physical quantities. First one is length, mass, electric current, temperature, time, amount of substance, and luminous intensity. These are the 7 physical quantities and their SI units. Okay, now next topic,
what is that? You can learn these definitions also in detail, and also you study these topics in physics also. Okay, so not necessary to learn here also, but you, if you want, then you can learn. Okay, so some important definitions here also we want to discuss. What is difference between mass and weight? Mass and weight. Mass is substance, is the amount of matter present in it. Amount of matter present in it, that is mass, and weight is the force exerted by gravity on an object. जो मास होगा वो अमाउंट ऑफ मैटर होगा जो उसी में प्रेजेंट होगा किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस, और जो वेट है वो फोर्स है, जिस ग्रेविटी से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम वेट कहते हैं, इसको फोर्स कहते हैं, उस फोर्स को ही वेट कहा गया है। तो इसको हम W से डिनोट करते हैं, W इक्वल्स टू mg। अगर हम इसकी बात करें तो अमाउंट ऑफ मैटर और मास ऑफ द सब्सटेंस में रिलेशनशिप की, तो W इक्वल्स टू m इंटू जी, where m is the amount of matter, that is mass. This is mass, and g is acceleration due to gravity, and W is the weight, which is force actually, जिसको फोर्स कहा गया है वो है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो दोनों का मास का और वेट का, दोनों का जो SI यूनिट है वो किलोग्राम ही है। SI डिराइव्ड यूनिट है, और इसका वेट का यूनिट जो है वो न्यूटन। न्यूटन क्या होता है? मीटर। F इक्वल्स टू एम में अगर हम देखें तो W इक्वल्स टू m इंटू जी होगा। तो यहाँ पर जो ये फोर्स का यूनिट होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F इक्वल्स टू m इंटू जी, m kg, and A is meter per second square, so kg meter per second square, same unit here also. Gravity also meter per second square, so unit of the F and W are same, that is Newton. Okay, next, volume is the quantity of three-dimensional space enclosed by some closed boundary. For example, the space that a substance or shape occupy or contains. Volume is often quantified numerically, and its unit is meter cube. Density, mass per unit volume, that is known as density, and its unit is kg per meter cube. Temperature is also physical quantity, physical property of matter that extensively represent as common notation of hotness and coldness. Common notation of hotness and coldness, that is known as temperature. This is definition of temperature, and there are three scales of temperature. You already know: degree Celsius, degree Fahrenheit, and Kelvin. So their measurement relationship also given here. Fahrenheit 9/5 C, degree Celsius plus 32 in Celsius scale, and in Kelvin degree Celsius plus 273. By using this relationship we can convert the temperature into different, like Fahrenheit to Celsius, Celsius to Fahrenheit, or Kelvin to Celsius, Celsius to Kelvin. There is no doubt. So law of conservation of mass, which is included in law of chemical combination. There are 4, 5, 6 different laws are there, which is based on chemical combination. So first is law of conservation of mass. It is given by Antoine Lavoisier in 1789, and in this law statements are given that mass of the reactants are always equals to the mass of the product. Okay, so we can also say that mass can neither be converted, not it neither can be created not to be destroyed. So मास को ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और लॉ ऑफ कांस्टेंट डिफिनिट प्रोपोर्शंस में अगर देखें तो जो रेशियो है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड होकर क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड, फिक्स्ड रेशियो में, और इसका जो है
और ये लॉ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में होता है जब दो एलिमेंट्स कंबाइंड होकर दो या दो से अधिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसमें मास का रेशियो जो वन एलिमेंट्स का होगा वो कंबाइन होगा फिक्स्ड मास के दूसरे एलिमेंट से, और ये कंपाउंड होल नंबर रेशियो में होगा। इसको डाल्टन ने दिया था। और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जब थ्री एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं और उनका कॉम्बिनेशन जो होगा टू फॉर्म three compounds, then the ratio of masses of the two elements combining with fixed mass, and third, and the ratio in which they combine with each other by simple whole ratio to each other. This law was given by Richter in 1792. Okay, so Gale-Sykes law of gaseous volume. This law is also given by Gale-Sykes in 1808. He observed that when gas combined or are produced in a chemical reaction, they do in simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. In 1811, Avogadro also proposed when two equal volume of gases combine together and the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. उनमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ये 6 लॉस जो गिवन है, ये इसको कंबाइन किया किसने? डाल्टन ने। और एक कॉम्बिनेशन जो डाल्टन ने लॉ प्रपोज किया 1808 में, और ये न्यू सिस्टम केमिकल फिलॉसफी पर था, उसमें क्या बताया गया कि जितने भी एटम्स हैं वो सभी एक आइडेंटिकल, इनकी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होती है, इनका मास सेम होता है, और एटम्स जो हैं वो एलिमेंट्स मास से डिफ़र करते हैं, क्योंकि सबका जो मास होगा वो सेम होगा। ये ऐसा किसने कहा था? डाल्टन ने। एटम्स ऑफ द एयर, बट their atomic weight is not different, same. They differ in their mass. Atoms of different elements differ their mass, but all the atoms of a given element have identical properties, including identical mass. And the compound are formed when atoms of different elements combined in a fixed ratio. And fourth one is chemical reaction involves reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in chemical reactions. Means this is basically law of conservation of mass. Okay, so basically what is difference between atoms and molecules? Atom is the smallest particle which can take part in chemical reactions. That is atom, smallest particle, and this one is actually first, if we can say that the molecules, what is difference? Basically they cannot participate in the chemical reaction, whereas and they exist together in nature. This group of similar or dissimilar atoms वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। These are basically difference in atoms and molecules. So by this flow chart we can say that the moles of the substance, how they can interrelate to each other, and this one moles of substance molar mass and Avogadro number, then we get number of molecules. मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से अगर जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो मास सैम्पल, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड होता है मल्टीप्लाई करने पर, और डिवाइड करने पर हमें मोल्स ऑफ सब्सटेंस मिलता है। ओके, so it's used in actually numerical problems which we discussed later on. So in next class I want to discuss about some problems, numerical problems related to this topic, like law of chemical combination, and it will be given to